We are live Hi now. Paresh bhai. We are live now. Khushbu, please start the session. All MOC microphone and camera on. All MOC. Start. Okay, sir. न चोराहार्यम न च राजहार्यम न भातृभाज्यम न च भार्यकारी वे कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम. With these means, it cannot be stolen by thieves, nor it can be taken away by the kings. It cannot be divided among the brothers. It does not have weight. It's spent regularly and always keeps growing. The wealth of knowledge is the most superior wealth of all. These are not just thoughts, but the actual thinking of Vitt Salahkar Samiti. Good afternoon to all the eminent dignitaries, prominent members of fraternity, and all the beautiful present souls present with us live on this webinar. I, Khushbu Jain, welcome you all on behalf of whole CA family on this continuous learning journey organized by none other than Vitt Salahkar Samiti with a sparkling theme, Kar lo Duniya Mutti Mein. I've always thought the teachers, in their way, are holy angels, leading their flocks out of the darkness. And it's an honor itself to have such a great mentors with us. Moving forward, I have a question for our audience so as to ensure that they are not sleeping after my shlok. Which part of our body act as a control system? I request audience to answer please on their chat box only. Yes, you all are right with the answer brain. But you have to train your brain to be stronger than your emotions, or else you lose yourself every time. The brain is a tool for the mind to manifest our soul's purpose. Give your brain the right nutrition, meditation, sleep, daily exercise to power up one of the greatest tools that our body holds. Our exotic speaker today, CA Kanika Jain Rathi ma'am, will trigger on this very interesting topic, train your brain. Over to you, Harshit. थैंक यू खुशबू। साहिल पे पहुंचने से इनकार किसे है? साहिल पे पहुंचने से इनकार किसे है? लेकिन तूफानों से लड़ने का मजा ही कुछ होगा। कहते हैं कि किस्मत खुदा लिखता है, कहते हैं कि किस्मत खुदा लिखता है, लेकिन उसे मिटाकर गढ़ने का मजा ही कुछ और है। With these inspirational lines, I would like to request a glorifying personality, CA Ankit Maheshwari sir, to deliver welcome address. Ankit sir is serving as treasurer of the Jaipur branch of the ICI. He also co-founded a skill development agency, Map Your Skills, which is working on bridging the gap between candidates' skill and industry requirement. We welcome you, sir, to address our learned audience. Over to you, sir. Ankit Peshwe, sir, please. Ankit is unable to join due to some technical issue. Please continue. He's done with his laptop. I think Ankit sir has joined. He's there. Ankit join. Yeah. Ankit please. ऑडिबल है सर, आवाज आ रही है? हाँ जी, Yes, please. sir. Ankit sir, start with your welcome address, sir. Thank you so much, Ashish ji. Just as I entered the room, right? So I'll first start with my welcome address. And first of all, before I start the session, I wish to compliment to my dearest friend Rohit Rohatia because of joint efforts of Rohit ji and Gautam ji. I am here, and not only compliments for inviting me, but rather full marks for taking this initiative of ESS, doing multiple programs in it,
doing programs for students at this time, at this very, very tricky time of COVID-19. So, sir, full marks to your team efforts, both of your efforts. And then before I further proceed from here, again, I have a dear friend, Ankit Jain here, past chairman of Jaipur branch. We already had some Sunday plans and they're still pending. Right. Compliments to you being as a director, program director coordinator of this VSS student conference or student, I would say, webinar, along with my elder brother Rohit Maheshwari ji. All of you people have shown this entire fraternity that the kind of efforts you have put in is bringing a lot of change in the students' attitude, results, and many things are happening around. I would also thank the conveners for ensuring this program goes like this in a very seamless way. And lastly, my thanks to I might miss some people, but lastly, my thanks to all the students who have been attending these back to back programs and making this event a very, very successful event. So before I invite the speakers, right, Ashish, how much time do I have? क्योंकि मैं तो बोलना चालू होता हूँ तो आप लोग बता दो कितना समय है मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है. Sir, 2 minutes you can speak, sir. No issues. 2 मिनट बोल सकता हूँ. Yes, sir. Sure, sir. Right. तो मैं जो सभी बच्चे इस वेबिनार को ज्वाइन करें उनको एक छोटी सी चीज बोलना चाहता हूँ कि ये जो थीम है पूरे वेबिनार की और आज की थीम स्पेसिफिकली अगर बात करें उसमें दो बहुत ही अच्छे स्पीकर्स है, कनिका जी और परेश बहुत परम मित्र भी हैं, जो कि ट्रेन योर ब्रेन पे बात कर रहे हैं और एक स्पीकर बात कर रहे हैं अकाउंटिंग टुडे एंड टुमारो. So both of these issues are very, very important issues. As far as train your brain is concerned, तो मैं छोटी सी मेरी एक स्टोरी 2 मिनट में यही सुनाने की कोशिश करता हूँ आशीष जी कि when I started, I was a science student. So as a science student, when I cleared my 11th standard, rather I was not able to clear it. I failed in 11th standard. And from 11th standard I repeated that class. ये सभी बच्चों के लिए वो कहानी है जो लाइफ में छोटे छोटे से फेलियर्स देखते हैं और ये सीए की जर्नी में ये इनएविटेबल है कि आपको ये छोटे बड़े फेलियर जो हैं ये देखने पड़ेंगे और इन फेलियर से ओवरकम करने के लिए इट इज इम्पोर्टेंट दैट हाउ डू यू ट्रेन योर ब्रेन. मतलब प्रोफेशन आजकल तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी है कि हाउ डू यू ट्रेन योर ब्रेन. और मैं सिर्फ अपनी कहानी ये सुनाना चाहता हूँ कि मैंने मेरे ब्रेन को कैसे ट्रेन करा मेरी टफ सिचुएशंस में. तो मुझे एक टफ सिचुएशन मेरी स्टूडेंट लाइफ की याद आती है जब मैं 11th स्टैंडर्ड में फेल हो गया और मेरे पेरेंट्स बड़े चिंता में आ गए कि इसका क्या होगा. तो मुझे इधर उधर 2-4 इवन आई हैड टू गो टू अ साइकेट्रिस्ट ऑल्सो. तो उन्होंने बोला कि कोई साइकेट्रिस्ट बोले कि साहब इनको डिसलेक्सिया की दिक्कत है. सो एक थ्रेड सामने आई. डिसलेक्सिया वो होता है जिसमें आदमी लिखने में और पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत होती है. तो आप लोगों को जान के बड़ी हैरानी होगी कि मेरे सीए के मैक्सिमम पेपर जो थे उसमें मेरा कैप्स लॉक ऑन रहता था. और जब फेल होके मैंने अपनी चार्टेड अकाउंटेंसी की जर्नी चालू करी तो मुझे ये बात, मेरे घर में ही बहुत ऐसे लोग होते, परम लोग होते जो है ना, काफी डिस्करेजमेंट भी आता है सीए की जर्नी में. तो ये डिस्करेजमेंट भी आया कि आपको चार्टेड अकाउंटेंसी नहीं करनी चाहिए और बोले यार यू आर तो ऑलमोस्ट स्ट्रगलिंग टू पास 11-12, तुम सीए जैसा टफ कोर्स कैसे करोगे. तो मैंने जैसे ही ऐसी कोई टिप्पणी आती है तो मैं उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह सेंस करता हूँ और मैंने एक अपॉर्चुनिटी की तरह सेंस करा जहाँ पे मैंने ये कोशिश करी कि मैं इनको ये प्रूव करूँ कि ये जो बोल रहे हैं मैं वैसा नहीं हूँ, मैं इतना डम नहीं हूँ. तो मैंने फाउंडेशन का एग्जाम क्लियर करा और जिन्होंने ये टिप्पणी करी थी सबसे पहले उनको मिठाई खिलाने पहुंच गया. तो उन्होंने हंसते हुए बोला, और सीपीटी के बच्चे इस बात को बहुत पहले समझते थे, फाउंडेशन के बच्चे भी समझेंगे कि साहब फाउंडेशन तो जो है वो तुक्के में हो जाता है. तो मैंने कहा तुक्के में हो जाता है तो आप कर लो. तो बोले मेरी तो उम्र हो गई है. मैंने कहा आपके बच्चों को करा दो. तो मैं थोड़ा ब्लंटली बोलता भी हूँ. प्रोग्रेसिंग
फिर मैंने इंटर किया और मैं फिर मिठाई खिलाने गया और फिर कोई टिप्पणी मिली और वो हसीन दिन आ गया जब मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी का फाइनल एग्जाम क्लियर करा और मैं फिर उनको मिठाई खिलाने गया। तो इस बार उन्होंने कहा कि यार अंकित तेरे को पता है क्या? मैंने कहा क्या? बोले हमें क्या है, बचपन से पता था कि तेरे अंदर कोई बात है। तो मैंने कहा यार दुनिया कैसे अपने एटीट्यूड को और परसेप्शन को चेंज करती है, बचपन से किसी को कुछ नहीं पता होता। आई थिंक जो मोमेंट है वो आज का मोमेंट है, जो सक्सेस का मोमेंट है वो आज का मोमेंट है। मुझे मतलब क्योंकि आशीष ने टाइम बहुत कम दिया, स्टोरीज बहुत सारी है, लेकिन मुझे लगता है कि जो द काइंड ऑफ एफर्ट और जो डिटर्मिनेशन आपको चाहिए इस पूरी जर्नी में, ना सिर्फ एग्जाम के लिए बट इवन पोस्ट एग्जामिनेशन, इवन इवन थ्रू आउट द लाइफ एज अ प्रोफेशनल, देयर आर ऑल प्रोफेशनल्स, अंकित जी, गौतम जी, आशीष जी, अनु भाटिया सर मुझे थोड़ी देर पहले स्क्रीन पर दिखे थे, उन्हीं का स्टूडेंट हूं मैं। तो सभी लोगों ने अपनी लाइफ में वो टफ टाइम्स फेस कराए और उस सक्सेस का वो है आई थिंक डिजायर, वो है डेस्पिरेशन और वो है द काइंड ऑफ एफर्ट यू आर पुटिंग एवरी टाइम व्हेन यू आर appearing for the exam or when you are appearing for any big stage. So all I can say that the entire student fraternity with the help of VSS is absolutely in right and safe hands. Looking at Ashish ji, looking at Ankit ji, Gautam ji, Rohit ji, ये लोग ऑलरेडी इतना मेंटरशिप दे रहे हैं स्टूडेंट्स को और मैं ये बोलना चाहूंगा इस माध्यम से कि इतने अच्छे मेंटर्स आपको मिले हैं, कृपया करके इनका हाथ मत छोड़िएगा। Mentors are they guide you, they drive you, and that is how you can make a better life, not only by qualifying the exam but even post qualifying the exam. So thank you so much Ashish ji for inviting, and thank you to the entire team, including special thanks to Rohit ji. Thank you so much, sir, for your kind deliberation. मैं तो सर को टाइम देने वाला कौन होता हूँ? I have been a student of sir as well. Next time we'll have a session with you, sir. If we have next time we'll call you as a guest, right? So I will now switch over the program to MOC. Thank you so much, sir. Thank you for your kind words, sir. Thank you. Thank you, sir, for your impulsive words and directing us for accepting problems as challenges. Now, I would like to invite CA Anup Bhatia, sir, to enlighten us with words of wisdom. Anup sir is very cooperative and very polite personality who expertises in the field of direct taxation. He has been a mentor to a lots of students across the country on direct tax matters. We are glad to have you, sir. I request you to kindly guide us with your golden words. Over to you, Anup sir. Thank you, Harshit. Am I audible? Haji. See, this is really, I can see that how the COVID-19 scenario is converted into opportunities, and this kind of opportunity which is created by this platform, specifically by Gautam ji and Rohit bhai, it's an opportunity which is created for all. And I have seen that this particular opportunity is not only created for the chartered accountants as well as for students. And you can see there is a kid behind me. He's my elder son. So when he used to look at me, वो बोलता है, मैं भी कभी निकलता हूँ कोविड में तो बोलता है पापा मैं भी ऑडिट करने जाऊंगा। तो मेरे को लगता है कि यार इसको सीए बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए। अभी तो बहुत छोटा है। अब मैं ऐसा क्वेश्चन क्यों रख रहा हूँ, जरा आप इस बात को समझिएगा। ये जो अपना प्रोफेशन है ना, मैं केवल 5-1 मिनट लूंगा सर यहाँ पर, बिकॉज हमारे साथ बहुत सारे ब्लूमिंग बर्ड्स हैं यहाँ पर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने आए हैं, जो एक सपना लेकर के चल रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं हमारे जैसे जिन्होंने वो सपना पूरा कर लिया। और मैं लिटरली आपको बोलता हूँ कि मैं जिस प्रकार से यहाँ तक आया हूँ, आई रियली बिलीव कि इट इज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, मेरी मदर की ब्लेसिंग्स थी तो यहाँ तक हुआ। एंड सेम थिंग विल वर्क विद यू एज अ स्टूडेंट, बिकॉज 2 चीजें हैं सर, आप लक पर बिलीव कर सकते हैं और आप मेहनत पर बिलीव कर सकते हैं। लक आपके मेरे कंट्रोल के बस की बात नहीं है, जो ईश्वर ने लिख दिया वो लिख दिया, ठीक है। लेकिन मैंने जहां, क्योंकि मैं वो सीए हूं सर जो 5 अटेम्प्ट में बना चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं,
तो जब 5 अटेम्प्ट में कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है तो उसको दर्द मालूम होता है कि यार फेल हो करके कैसे पास हुआ जाता है, और कितना मतलब मैं इसको बोलता हूँ जलालत होती है जब बंदा फेल होता है, घर वाले बेचारे परेशान, मम्मी की भगवान से लड़ाई हो जाती है कि ये क्या हुआ, तू फिर फेल हो गया, आपकी बार तो मैं पूजा ही नहीं करूंगी। तो मैं मन में सोचता कि गलती तो मेरी है लेकिन भगवान को सुनना पड़ता। सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इट्स अ फैक्ट। आप कभी भी जीवन में फेल होंगे और आप पीछे जाकर के देखिए, बिकॉज आज हम उस समय में है सर जहां कॉपियां इतनी बढ़िया तरीके से अवेलेबल हैं कि मैं देख रहा हूं कि स्टूडेंट के साथ में अगर कभी अन्याय भी हो रहा है तो वो चीज बड़े मुखर तरीके से सामने आ रहा है। और ये चीज शायद मेरे साथ भी कभी हुई हो तो मैं भी ये ब्लेम कर सकता हूं। तो मैं स्टूडेंट के सामने क्या बात रखना चाहता हूं सर, मैं इस बात से निश्चित रूप से खफा होऊंगा अगर मुझे दिखे कि कोई डिजर्विंग कैंडिडेट या ऐसा कैंडिडेट जिसकी कॉपी में बढ़िया मार्क्स हो, मैं किसी मुद्दे को नहीं छेड़ रहा, केवल एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर किसी के साथ अन्याय होगा तो न केवल उसको बल्कि दूसरे व्यक्ति को भी बुरा लगेगा। पर सर ये जो हमारा सिस्टम है सब्जेक्टिविटी का, और उस सब्जेक्टिविटी को ऑब्जेक्टिविटी में कुछ हद तक बदल पाए हम, अभी पूरा ऑब्जेक्टिव नहीं हुआ सीए का एग्जाम, तो ये कुछ हद तक इस तरीके की प्रॉब्लम बनती रहेगी। लेकिन हमें एज अ स्टूडेंट क्या चीज यहाँ पर मैसेज लेना है सर, कि आप स्वयं को इतना मजबूत करिए। दिस हैज हैपेंड टू मी ऑल्सो, और बहुत सारे मेरे सीए मित्र हैं जो यहाँ बैठे हैं जिन्होंने इस चीज को ऐसे ही कन्वर्ट किया है, क्योंकि आज तो कॉपियां मिल रही हैं, उस समय कॉपी भी नहीं मिलती थी। क्या कन्वर्ट किया है सर, कि किसी के बाप में दम हो आपको फेल करके दिखाए। आप समझना सर मेरे इस स्टेटमेंट में बहुत दम है, किसी के बाप में दम हो आपको फेल करके दिखाए। जब आप इस लेवल पर जाकर के मेहनत करेंगे, जब आप इस तरीके से खुद को परखेंगे, आज स्वयं को परखिए सर, फिर लेट द अदर्स देन टेस्ट यू। इफ यू आर रेडी एट दैट लेवल एज अ स्टूडेंट, then I am sure that nobody is there to see that you fail. Rather, everybody will see that you are the person who has not only cleared but has cleared with a good marks. See, it may appear to be कि सर आप थोड़ा बढ़ चढ़ करके बोल रहे हैं या इतनी ज्यादा बात कर रहे हैं। आज मैं मानता हूं सर स्टूडेंट्स में आज की सोच के तरीके में बहुत बदलाव आ गया, लेकिन स्टिल सर फिर भी ह्यूमन वैल्यूज या जो बेसिक कल्चर इनकलकेट हमारे अंदर हुआ है वो इसी प्रकार का है कि वी ऑल आर ड्रिवन बाय वैल्यूज। And therefore I am of the mind that if you are strong in your values, if you are strong in your preparation, it is not only to clear the CA examination, but it is also to become a successful chartered accountant. And that is why Vitt Salakar Samiti is there today to bring you all these kind of eminent faculties who are guiding you in this particular mission. So I wish you all the best. I wish you all the best that you get benefited. I wish all the best to this Samiti who is contributing a lot to the CA fraternity. And I also congratulate to today's faculties for sharing their valuable thoughts that they will now come with me. Thank you. Thank you. Thank you so much, sir, for blessing us and guiding us that results are depending on our hard work. Now, it's time to introduce a personality who is life skill coach, international trainer, and corporate trainer. Our today's trainer is MBA in finance and a practicing chartered accountant by profession and has offices in Delhi, Jaipur, and Jalabad. She is certified national trainer of the JCI India and has served at various leadership positions in the organization. She has conducted over 550 training programs internationally as well as in India and coached approx 30,000 people till date. She is a regular training faculty at ICI and ICSI and visiting training faculty at Career Point, Resonance, and Ellen. She is a versatile personality who is an avid speaker, author, learner, and a singer as well. Her vocational accolades also include courses like Mind Shift Training, Creative Think course, and a very recently pursued COVID-19 contact tracing from across the globe. So, my dear friends, please welcome Sri KANIKA Jain Rathi ma'am for her kind deliberation. Ma'am, please, the audience is all yours now. Thank you so much,
Thank you so much, Harshit, for your wonderful introduction, and Khushbu for the wonderful opening. Uh, First of all, before I start the session today, I would like to extend my heartfelt gratitude to the directors of VSS, CA Gautam Sharma ji and CA Rohit Dhruvatia ji, for giving me the opportunity, and the co-directors whom I'm really close to, CA Rohit Maheshwari sir and CA Ankit Jain. हम लोग JCI में काफी टाइम से एक दूसरे के साथ associated है, and the entire team of VSS. As rightly said by Anup ji and Ankit Maheshwari ji, every CA has a different story to tell to the CA students. हम सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, जब हमने CA किया है तो हम हर किसी ने कोई ना कोई फेज ऐसा आया है जिंदगी में कि जिसके बारे में हम स्टूडेंट्स को बता सकते हैं, and they can definitely learn from it. So the topic for today is train your brain. हम जिस प्रोफेशन में हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, सारा काम दिमाग से चलता है, और उस दिमाग को किस तरह से ट्रेन करना है, this is what we are going to talk about in the coming 30 minutes. So I would like to start with sharing my screen. Just give me a minute. I hope my screen is visible. Okay, so train your brain. किस तरह से अपना दिमाग है उसको ट्रेन करना है. बिफोर आई स्टार्ट, कुछ सिंपल से क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करना चाहूंगी कि एक यंग कंपनी थी सिलिकॉन वैली में जो कि सेल के लिए आई हुई थी फॉर $750,000, लेकिन एक्साइट जो कि आज ask.com के नाम से जानी जाती है, उसने सोचा कि नहीं, शायद it is not that a good deal. So Excite did not choose to buy that company, and today that young company is worth over $365 billion, and most of us are using it on a daily basis. I am sure आप में से काफी लोग इसके बारे में जानते होंगे. For those who do not know about it, the company is Google. एक डिसीजन और ask.com को आई डोंट थिंक सो बहुत सारे लोग ज्यादा जानते होंगे. गूगल, yes, all of us know about it. So one decision, buying it or not buying it, changed the fate of Google and Excite similarly. William Orton, Western Union's president and owner of a monopoly of the telegraph, refused the offer to patent a new invention for $100,000 in 1870s. Yes, in 1870s, $100,000 used to be a huge amount. But today that invention is a staple in every household. Telegraph अब हम लोग use नहीं करते हैं, but we are still using that invention, and that invention was telephone. Telephone, and then came the mobile. Mobile is also working on the same platform because technology काफी हद तक similar है. So again, one decision, telegraph outdated हो गया, लेकिन telephone आज भी चल रहा है. And again, it has become a necessity. We cannot imagine our lives without telephones and mobile phones. Another one. Ross Perot, a billionaire and one-time presidential candidate, passed the opportunity to buy a company which was led by a 23-year-old in 1979 for a price of $50 million range. Now, Ross Perot, who was extremely rich, still thought that $50 million is quite a huge amount to pay for a company which is led by just a small kid. 23 years old. हम में से कुछ लोग होते हैं जो कई 21, 22, 23, 24 साल की एज में हम लोग सीए बनते हैं. तो जैसे ही एक सीए बने और ऐसा कुछ ऑफर किसी के सामने लेके जाएंगे तो शायद लोगों को विश्वास भी ना हो. ऐसा ही हुआ उस इंसान के साथ में. But today that person is one of the most wealthiest persons of the world, and that person is Bill Gates. Now, जो 3 एग्जाम्पल्स मैंने अभी आपके सामने रखे, तीनों के केस में क्या हुआ,
शायद अगर डिसीजंस अदरवाइज होते तो गूगल ना होती, टेलीफोन ना होता, या टेलीफोन होता भी और बिल गेट्स नहीं होते। इट वाज दैट कि उस 23 साल के लड़के ने सोचा कि शायद ये जो फेलियर आज मुझे मिला है, क्यों मेरी कंपनी को किसी ने $50 मिलियन में नहीं खरीदा, दैट इज kind of a stepping stone for me, that now what I have to do is I have to show to the world that I can do wonders, and we all know the fate of it. So it was about making a decision at the wee hour. So एक सिंपल सी बात से अगर मैं आप लोगों से पूछना चाहूँ, आप लोग मेरे साथ Zoom पे तो नहीं एसोसिएटेड है, बट जो भी YouTube लाइव देख रहे हैं, सो अगर एक बात पूछें कि हाउ मेनी डिसीजंस डू वी टेक ऑन अ डेली बेसिस, तो अगर हम वेगली सोचने की कोशिश करें तो हमें लगता होगा कि 100-200 डिसीजंस हम दिन में ले लेते हैं। बट देयर वाज अ स्टडी डन एंड यू वुड नॉट बिलीव द नंबर जो उस पूरी स्टडी के बाद सामने आया। द नंबर इज 35,000 decisions. We as an average human being take 35,000 decisions on a daily basis. Consciously और सबकॉन्शियसली, दोनों तरह से। कॉन्शियसली सारे डिसीजंस नहीं ले सकते, अदरवाइज सारा टाइम यही चलता रहेगा, लेकिन सबकॉन्शियसली भी हम बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं। डिसीजंस एज सिंपल एज दैट कि हमें क्या खाना है। सो अगर बारिंग द टाइम ऑफ कोविड, जब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते नहीं है खाने के, अभी तो घर में जो मिल रहा है वही खाने को बहुत है, वो भी मिल जाए वही बहुत है, बट अदरवाइज we take almost 227 decisions only for food. और एक सही डिसीजन हमें कहाँ ले जा सकता है और एक गलत डिसीजन हमें कहाँ ले जा सकता है, यही हमने अभी बात की है। So decision making as it is involves when there are a lot of alternatives. We had a lot of alternatives जब हमने हमारा 10th कंप्लीट किया, उसके बाद +1 +2 में we had alternatives of going for humanities, science math, science bio और कॉमर्स। हमने कॉमर्स सेलेक्ट किया, एंड कॉमर्स, या कुछ लोग होंगे जो साइंस से भी सीए वाले फील्ड में आए, एंड देन आफ्टर आवर +2 वी थॉट ऑफ डूइंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी। मैं कई बार लोगों से कहती हूँ कि हमारी मती मारी गई थी जब हमारे सारे फ्रेंड्स एंजॉय कर रहे हैं अपनी जिंदगी। चलिए हमारे टाइम पे तो अच्छा हुआ करता था कि सोशल मीडिया इतना नहीं हुआ करता था, फेसबुक इंस्टाग्राम नहीं होता था, तो चिढ़ने का मौका थोड़ा कम मिलता था। बट नाउ आई एम श्योर जो बच्चे कॉलेज जा रहे हैं या जो चीजें कर रहे हैं, उनको वो अपने फेसबुक और इंस्टा पे पोस्ट करते रहते होंगे। एंड वी एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बडिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, या एज स्टूडेंट्स ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स, व्हाट वी कम अक्रॉस इज, हमारी जिंदगी कहाँ से कहाँ तक सीमित रहती है। हम सुबह उठते हैं, तैयार हुए, कोचिंग गए, उसके बाद ऑफिस गए, वापस आए, पढ़ाई की और सो गए। वी हार्डली गेट एनी टाइम इन बिटवीन। वी हैड अ लॉट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। वी हैव, ऐसा नहीं है कि एक ही चॉइस ही हमारे पास कि यही ही कर सकते हैं। वी हैड अ लॉट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, बट वी वेंट इन द राइट डायरेक्शन। व्हाई वुड आई कॉल इट द राइट डायरेक्शन? आपको पता होगा कि इंडिया में हर साल जितने इंजीनियर्स बनते हैं, ऑलमोस्ट 3 लाख प्लस इंजीनियर्स बनते हैं, उतने आज तक इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। नाउ लुक एट द डिफरेंस, यू नो, engineers versus chartered accountants. So maybe we got in the right direction. We have selected a path for ourselves जहाँ पे हमें name, fame and money तीनों में किसी चीज में भी कोई कमी नहीं रहने वाली है. But then there is a lot of uncertainty involved. Uncertainty regarding our results. Uncertainty whether we will be able to finish our course or not. And then the high risk consequences is I have friends जिनका कई सारे attempts के बाद भी CA नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है कि they're not doing good in their life. बहुत सारे और options हैं. We're going to talk about it a little later. And there can be interpersonal issues. कुछ लोग होंगे जिनको जबरदस्ती CA करने के लिए लगा दिया गया, जैसे डॉक्टर्स की फैमिली में होता है ना. Because now I have a hospital, husband and wife are doctors, तो क्या होता है कि बच्चे को भी डॉक्टर ही बनना है, क्योंकि ये आगे हॉस्पिटल कौन संभालेगा.
disease के केस में भी ऐसा होने लगा है, and then there is a lot of complexity that is also involved. So decision making में ये सारी चीजें हैं. एक छोटी सी बच्ची थी, उसको पढ़ने का बहुत शौक था. She was really really fond of studying, but she belonged to a very poor family. इतनी गरीब फैमिली थी कि उसकी माँ नहीं चाहती थी कि वो पढ़े, but her father wanted कि नहीं, जैसे तैसे मैं जितना पढ़ा सकता हूँ अपनी बच्ची को उतना पढ़ाने की कोशिश करूँ. तो उसको वो अपने घर के काम के बहाने, गाय चराने के बहाने, किसी भी बहाने स्कूल भेज दिया करते थे. बट पुराने जमाने में जनरली और गांव में क्या होता है, जल्दी शादियां हो जाया करती हैं. तो एट द एज ऑफ 12 years शी वाज मैरिड टू अ पर्सन हु वाज 20 years older. 20 साल उनसे बड़े थे, क्योंकि लेकिन ही बिलोंग टू अ फैमिली, घर वालों के बच्ची की जिंदगी सज जाएगी, तो दे गॉट हर मैरिड एंड शी कुड नॉट स्टडी बियॉन्ड the age of 12. धीरे धीरे ठीक ठाक सा चलता रहा, बट जब वो 19-20 साल की उम्र तक पहुंची, by that time she had 3 babies and she was pregnant with the 4th. Some sort of miscommunication, कुछ problems हुई, और the husband thought that the wife is cheating on him. और इस तरह से misunderstandings बढ़ गई कि the husband beaten her up almost till death. अब उनके घर के पीछे एक बाड़ा था जहाँ पे जानवर बंधे हुए थे, गाय बंधी हुई थी, वहां पे उसको ले जाके इतनी बुरी तरीके से मारा गया. एंड दैट लेडी वाज प्रेग्नेंट एट दैट टाइम. इतना मारा कि वो बेहोश हो गई. एंड द हस्बैंड थॉट दैट शी इज डेड. अर्ली मॉर्निंग शी गेव बर्थ टू अ बेबी गर्ल. जैसे तैसे उसने अपने आप को संभाला. सुबह जब देखने आए उसके इन लॉज भी कि whether she is there alive or not, there was a cow जिसको वो रोज चारा डाला करती थी, जिसकी वो रोज सेवा करती थी. उस गाय ने उसकी वहां पे रक्षा की. What that lady thought in her mind, she thought there must be something कि भगवान नहीं चाहते कि मेरी जिंदगी यहाँ पे खत्म हो जाए. Now because this animal has helped me, इसने मेरी रक्षा की है, I am going to live my life. But life is not a piece of cake. एक अकेली लेडी एक छोटे से बच्चे के साथ जो पढ़ी लिखी भी नहीं है, वो उस बच्चे का भी उसे ख्याल रखना है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स में आ गई. और इस हद तक प्रॉब्लम्स में आ गई कि एक बार उसने अपनी जिंदगी में डिसाइड किया कि ओके आई कैन नॉट टेक इट एनी मोर, और रेल की पटरी के ऊपर जाकर वो लेट गई. और जब वो वहां लेटी हुई थी तभी उसने एक छोटे बच्चे की वहां पे आवाज सुनी. वो वाज एन ऑर्फन और उसको बहुत तेज भूख लग रही थी. वो भूख के वजह से रो रहा था, बिलख रहा था, एंड ही वाज आस्किंग फॉर हेल्प. दैट लेडी थॉट आई कैन नॉट लेट दैट किड डाई. मैं क्या करती हूँ, मैं कुछ भी करूंगी लेकिन इस बच्चे को मुझे खाना देना है. दैट मोमेंट पास्ट. और उसने वहां पे क्या शुरू किया, वो भीख मांग के उन बच्चों को पालने लगी. एंड व्हेन शी एक बच्चे को उसने देखा तो शी स्टार्टेड रियलाइजिंग कि एक बच्चा नहीं, ऐसे कई सौ बच्चे हैं जो उस एरिया में हैं who are orphans and who need help. तो उसने कहा कि मैं तो फिर भी बड़ी हूँ, I might, the God might have thought of something for me. And that very moment she trained her brain कि अब मुझे क्या करना है, I am not going to waste my life in this manner. मुझे इन सब बच्चों के लिए कुछ करना है. And that lady was Sindhutai Sapkal. And as you can see on your screens, this lady has been awarded by 3 of the presidents of the country. She is known as the mother of orphans. आई के नाम से उनको जाना जाता है. And वो ही भीख मांग के एंड लोगों से मदद ले लेके उन्होंने she has made a shelter home for orphans. और आज 1100 से ज्यादा बच्चों को उन्होंने अडॉप्ट किया है एंड उन सबको पढ़ा लिखा कर उन्होंने बड़ा किया. Now this was about training your brain. कितनी प्रॉब्लम्स आई जिंदगी में, हमारे पास तो फिर भी सब कुछ है. We have a good house to live in, we have parents, we have money, we have a family, and we have a brain. हमारे पास सब कुछ है. That lady had nothing. Still
She decided to go for her life, and that is how she is, Sindhu Tai Sapkal, being awarded by 3 of the presidents of India and is one of the most celebrated celebrity in her area. So it is just about taking the right decision at the right time, training your brain to take the exact decision, correct decision that you want at that point of time. Now, we are in this field of chartered accountancy, and मेरा जब introduction पढ़ा जा रहा था, तो introduction में practicing chartered accountant बहुत बाद में बोला, उसके पहले क्या चीजें, किस चीज पे focus किया गया, that she's an international trainer and a motivational speaker and a life skills coach. So it was all about T earlier. पहले होता था T. T is you have taken a degree. एक डिग्री हमने ले ली है, that is your chartered accountancy degree, and now what we have to do is we have to make our career in that particular field. अब आज की दुनिया में एक चीज से काम नहीं चलता. Now if you want to become rich, famous and successful, all three, and I am sure all of you would want this in your life. So the time has shifted from T to pi. Pi is having 2 simultaneous careers. One may be for money and one may be for your name and fame or whatever. And then एक बार जब name and fame आने लगती है तो अपने आप पैसा वहां से भी बनता चला जाता है. So for now, our focus is getting that degree because हम इंडिया में बैठे हैं and इंडिया में बिना पढ़ाई के trust me कुछ नहीं होता. It is extremely important for us to have a degree because जब आप, I remember I was thinking of doing law और मैं कॉलेज में जब अपना फॉर्म फिल करने के लिए गई तो गवर्नमेंट कॉलेजेस, यू ऑल मस्ट बी नोइंग कि कैसे वहाँ के हाल होते हैं. एंड द टीचर्स वर लाइक ओके ठीक है, ये बच्चों का रोज का काम है, आते जाते रहते हैं, दे वर फिलिंग फॉर्म्स एंड दे वर नॉट इवन रिस्पॉन्डिंग टू द चिल्ड्रन, टू द स्टूडेंट्स नाइसली. बट व्हेन आई वेंट, and by that time I was already a chartered accountant, when I went with my application and when I asked him a question saying, hello sir, I am CA Kanika Jain, the first reaction was, नीचे बाकियों की शक्ल भी नहीं देख रहे थे, the first reaction was उन्होंने आंखें उठाई और हाँ, yes madam. Now imagine the difference, you know, एक ग्रेजुएट को देखा भी नहीं जाता है and एक CA की वैल्यू हर किसी की नजर में बहुत ज्यादा होती है. एंड ट्रस्ट मी, व्हेन यू आर गोइंग टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम श्योर यहाँ मेरे साथ जितने भी CAs जुड़े हुए हैं, आई एम श्योर दे मस्ट हैव रियलाइज्ड इन देयर लाइफ that they are no less than a celebrity when they cleared their chartered accountancy course, because that is the kind of satisfaction this degree gives. And as we all know, it is considered to be one of the most difficult courses of the world also. So for now our focus is on getting the degree, but then going forward हमें क्या करना है, अपनी जिंदगी में सिर्फ एक चीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है, हमारे दिमाग को ये ट्रेन करना है कि किस तरह से और अपॉर्चुनिटीज भी हम निकाल सकते हैं. एंड काम किस उसके लिए कब से शुरू करना है, व्हाई एम आई शेयरिंग दिस राइट नाउ, बिकॉज अभी तो हमारा क्या फोकस है, हमें CA बनना है. मैं ये चीज अभी आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि जो बेस है आपका, वो बेस आज से बनना स्टार्ट हो गया है. जब हम अपनी आर्टिकलशिप कर रहे हैं तब हम वहाँ पे पीपल मैनेजमेंट, नेगोशिएशन स्किल्स और हाउ टू डील विद पीपल, हाउ टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स, सारी तरह की लाइफ स्किल्स हम शायद यहीं पे सीखने लग जाते हैं. I would completely give all the credit to my articleship. I did my articleship under a renowned chartered accountant of KOTA, CA Preetham Goswami sir, and he gave me all the opportunity to develop all these skills at the time of my chartered accountancy articleship only. So आज से बेस बनाना शुरू करें and going forward you never know आप कहाँ तक पहुँचते हैं. So ब्रेन को जब ट्रेन करने की बात आती है तो हमारे ब्रेन में कई सारी बायसेस हैं जो हम लेकर बैठे हुए हैं, और उन बायस से क्या होता है, हम पैसा लूज करते हैं, we end up making poor choices and we have false beliefs, गलत beliefs बनाकर बैठ जाते हैं, and उसकी वजह से क्या होता है, हमारा दिमाग सही तरह से
प्रोसेस नहीं करता जो इंफॉर्मेशन से करनी चाहिए. सो द टॉप 4 biases that cloud our judgment. बिकॉज अपने दिमाग को ट्रेन करने से पहले हमें जो हमारे दिमाग में जाले लगे हुए हैं उनको साफ करने की बहुत ज्यादा जरूरत. तो व्हाट आर द 4 biases that are clouding our judgment? तो एक सर्वे हुआ और उसमें पूछा गया कि कौन सी ऐसी सेलिब्रिटी है जिसे हेवन जाना चाहिए, जो डेफिनेटली लिविंग और डेड हु मस्ट हैव गॉन टू हेवन, और या फिर वो डेफिनेटली हेवन जाएंगी. तो उस सर्वे में पता लगा कि 79% of the people said that Mother Teresa is going to go to heaven. बट जब उन्हीं लोगों से एक और प्रश्न किया गया कि क्या आपको लगता है आप हेवन जाएंगे, आप स्वर्ग जाएंगे, तो क्या हुआ? तो ये हुआ कि लोगों ने कहा, excuse me, okay, yeah, so 87% लोगों ने कहा कि yes, I am going to go to heaven. क्या हम लोग इतने अच्छे हैं? क्या हमने जिंदगी में कभी कोई पाप नहीं किए जो हमें लगता है कि मदर टेरेसा तो 79% ही लोग ही माने कि वो शायद जाएंगी, लेकिन 87% of the people thought that they will go to heaven. And I am sure आप में से भी मैं लोगों से अगर पूछती कि आप में से कितने लोग हैं जो स्वर्ग जाएंगे, हम में से बहुत सारे, मेजरली सब लोग यही कहते कि हाँ हम डेफिनेटली स्वर्ग जाने वाले. Why does that happen? We think, again, as I said, a bias हमारे judgment को cloud करती है. That bias is called self-serving bias. अगर हम किसी से मिले और कोई हमें पसंद करने लगा, तो that means हम क्या सोचते हैं, वो हमें पसंद इसलिए करते हैं because we are likable, because हम अच्छे हैं. And if somebody does not like us, if somebody rejects us, then what do we think? That it is their problem that they are not getting us. In a way, this self-serving bias is kind of good for our self-confidence. क्योंकि इससे क्या होता है कि आप कभी भी डिप्रेशन में नहीं आते कि oh, I am not good enough. But do you think अगर हम हमेशा सोचेंगे कि हम सही हैं, तो हम सही डिसीजंस ले पाएंगे? क्या हम हमारे ब्रेन को सही डायरेक्शंस दे पा रहे हैं? No. It definitely protects our self-esteem, but अगर आंखें बंद करके रख ली हमने हमारी सारी गलतियों के लिए, तो हम हमारे दिमाग को क्या सिग्नल्स भेज रहे हैं? जो आप कर रहे हो वो सब सही है, और जो दूसरे कर रहे हैं वो शायद गलत हो सकता है, या शायद वो ही गलत है. Now, how to overcome that problem? इस प्रॉब्लम से कैसे पार पाया जाए? Your friends, your true friends, your close friends are the people who keep you grounded. वो ही ऐसे लोग हैं जो आपको, आपके पैरों को जमीन पर रखते हैं. अगर आपने कुछ गलत किया है, तो they will tell you that this is something that is not right. So have friends, have such people in your life who can tell you that what is right and what is wrong when you are in a dilemma. Or if you have such friends, nothing like that. And if not, then have such kind of mentors in your life, or seniors, or any of your family member whom you can talk to. Because you cannot be right all the time. This is trick number 1. Now, second one is cognitive fluency. Now, there are 2 phrases with 2 paragraphs which are written on this page. The first one is tuck your chin into your chest and then lift up chin upward as far as possible, 6 to 10 repetitions, and then lower your left ear toward your left shoulder and then your right ear toward your left shoulder, 6 to 10 repetitions. जो नीचे वाला टेक्स्ट है, exactly same चीज उसमें भी लिखी हुई है. But when people were given this task, तो पहले वाला जिसको टेक्स्ट दिया गया था, उसने इस काम को 30% कम टाइम में कर लिया as compared to जो नीचे वाला टेक्स्ट लोगों को दिया गया उससे. What was the problem? The problem was only the font. हमारे दिमाग को क्या लगता है, बिकॉज ऊपर वाली चीज पढ़ने में आसान है,
इसलिए वो आसानी से हो जाएगी। जहां भी थोड़ी सी डिफिकल्टी आई वहां पे हमें क्या लगता है कि शायद ये चीज करने में ज्यादा डिफिकल्ट हो सकती है। अब रेस्टोरेंट्स जाते हैं, फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स में जाएंगे, वहां पे देखेंगे मेन्यू जब आप खोलेंगे तो बड़ी अच्छी सी बड़ी अच्छे से फॉन्ट्स में मेन्यू लिखा हुआ होता है। रीजन बीइंग दे वांट टू ट्रिक योर माइंड इनटू थिंकिंग दैट इतने फैंसी जो नाम है, definitely that dish must be really nice. And not just simple example, a very very valid example, again a study has been done on this particular thing also, that in stock exchange also the stocks जब open करते हैं तो जिनके नाम pronunciable होते हैं वो they open with a 30% hike as compared to the stocks having unpronounceable names. Although over the period of 6 months क्या होता है, both of them वापस से balance हो जाते हैं because it has nothing to do with the unpronounceability of the name of that particular stock. So हमारा ब्रेन अगेन क्या करता है, जो चीज सुनने में आसान है वो चीज सही है. दिस इज हाउ आवर ब्रेन इज हार्डवायर्ड. हमें क्या करना है, अपने दिमाग को ये बताने की कोशिश करनी है, समझाने की कोशिश करनी है कि व्हाटएवर इज साउंडिंग ऑलमोस्ट राइट, अगर सब कुछ हरा हरा नजर आ रहा है, that is the time when you need to question yourself. There must be something there must be that is not correct. So whenever you are listening कि हाँ ये बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में, you know, कोई ऑफर आया है कि you know money back guarantee and 2 महीने में आपके पैसे डेढ़ के या डबल करके दे देंगे or something like that. That is the time when you got to question how is that even possible. So cognitive fluency के time पे क्या करना है, whenever it is sounding absolutely right, question your brain that no, it is the time when I need to think about it. The third one is sunk cost fallacy. Imagine कीजिए आप एक मूवी देखने गए हैं और उस मूवी में by the interval you realize कि ये जो मूवी है it is absolutely a wastage of time. It's absolutely trash and I'm not going to enjoy it going forward also. Now you have two options. The first option is you can stay there and watch the entire movie, and the second option is you can walk away and utilize your another 1 hour जो वहां पे waste नहीं किया आपने in a more productive manner, या ऐसा कुछ करने के लिए जो आप ज्यादा enjoy करें. Most of us what we do is हम पहले वाले ऑप्शन पे जाते हैं, पैसे तो लगा ही दिए, कोई बात नहीं, 1 घंटा और एसी में बैठे रहते हैं, कोई बात नहीं, ऐसा हम लोग सोचते हैं. बट दैट हैज संक कॉस्ट फैलेसी. पैसा तो आप ऑलरेडी लगा ही चुके हैं, कॉस्ट हैज ऑलरेडी बीन गॉन. हम लोग कॉस्टिंग में पढ़ते भी हैं, संक कॉस्ट हम लोगों को जैसे पता होता है, बट जिंदगी में हम उस फैलेसी को शायद यूज नहीं करते हैं. कॉस्टिंग के टाइम पे करते हैं, जिंदगी में शायद अप्लाई करना भूल जाते हैं. सो वी हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड दैट पर्टिकुलर अमाउंट, बट नाउ व्हाट यू आर वेस्टिंग इज द टाइम दैट यू कुड हैव सेव्ड yourself. जैसे हाउसफुल 4 देखने गए, just giving you an example, the movie that I did not like personally, हाउसफुल 4 देखने गए, by the interval I realized कि okay, I'm not going to enjoy, मुझे हंसी भी नहीं आ रही है इस मूवी में. What I did was let us just move out of the movie. Reason was I tried to utilize that time in having a nice dinner, enjoying with my family, because पैसा तो खत्म already हो ही गया. It happens with our it happens with in so many cases. It happens in our relationships कि हमने इतने सालों से फ्रेंडशिप चल रही है, चाहे वो कुछ गलत भी कर रहा है, वो we cannot, you know, उस रिलेशनशिप को खराब नहीं कर सकते. Another example, one of my friends was very intelligent. We were all rank holders of our school. All of us decided to go for chartered accountancy course. We were all, you know, that friend that I'm talking about, we were toppers of our college also, and we topped our school, and then we had AIR in our CA foundations also. But when it came to CA inter, she could not clear in 5 attempts.
नाउ हर बार यही सोचती, थर्ड अटेम्प्ट से हर बार यही सोचती, यार इतना टाइम लगाया, थोड़ा सा और लगा देती हूँ, क्या पता हो जाए. एंड बाय द टाइम शी वाज गिविंग हर इंटरव्यू, वी वर ऑलरेडी इन आवर फाइनल. दे देती हूँ, थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट, फिफ्थ अटेम्प्ट. Now after that she realized, and when she met a mentor of ours, she realized that maybe I am not going in the right direction, maybe there is something that is not correct. And then she decided to move forward with her life, and she did a course in mass communication and journalism, and her MBA, and now she's with Times of India and doing very well. तो हम में से कई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, वो भी इतना अच्छा नहीं कर रहे अपनी जिंदगी में जितना वो कर रही है. Now if she would have kept thinking, oh my god, I've already spent so much of time in CA, I need to continue, इंटर फिर भी हो जाता, फाइनल में क्या होता. I am not saying that you should leave CA if you cannot clear it in 5 attempts. अगर आपको लगता है that you are meant to become a chartered accountant, and if you have that kind of patience, definitely go for it, because it is one of the best degrees of the world. लेकिन अगर कहीं भी लगता है 1% भी डाउट है, मेरे ये क्या ज़्यादा सही है. So this was sunk cost fallacy and confirmation bias. हम as human beings हम क्या करते हैं, we only search for confirming evidences. हमसे जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, हम उसके कंफर्मेशन में आंसर्स ढूंढने लग जाते हैं. अगर मैं आज आपसे कहूंगी कि आज बहुत गर्मी है ना, तो आप मेजरली सारे लोग ये कहेंगे हाँ आज बहुत गर्मी है, लेकिन कल रात में बारिश हुई थी. यहाँ पे कोटा की मैं बात करूं तो आज यहाँ पे कल यहाँ पे बारिश हुई थी. So अगर मैं आपको उस बारे में बात करूं तो क्या कितना अच्छा मौसम था, तो अगर आपके वहां पे बारिश हुई होगी तो you would also start thinking in that direction, हाँ यार मौसम कितना अच्छा था. If I'll ask you about if you're happy with your social status, you would start looking for the evidences that yes, you know, this was something nice, this is something good in my social status. Oh, I have so many followers on my Insta. Oh, I have so many friends on Facebook. And if I ask you, are you not happy with your social status? Then what would you start doing? You would start looking for the contradictory evidences. This is the confirmation bias that all of us have. उस समय पे क्या करना है, जब आपको लगे कि एक्यूप्रेशर लेने जा रहे हैं और एक्यूप्रेशर काम करेगा, we all think on majorly most of us think in the positive direction of it. So जब positive सोचते रहते हैं तो कई बार क्या होता है, कई सारी चीजें ऊपर नीचे भी हो सकती हैं. So we got to think of the negatives also. That is the time when you need to train your brain कि life is all not हर टाइम गोल्ड एंड ग्लिटर नहीं होता है. वो कहते हैं हरा चश्मा पहना हुआ है तो दुनिया हरी हरी नजर आएगी. That's not the case. उस चश्मे को उतारिए, अपनी आंखों से देखिए कि what is right and what is not. So do not go for the confirmation bias, rather indulge your mind in thinking for the contradictory evidences. और वो किस तरह से किया जा सकता है? So I'll give you a quick example कि the Streamnaya road is extremely beautiful with gorgeous mountains, cliffs and greenery, while the road offers dramatic scenery. This combination of extremely narrow roads and tall cliffs have led some to consider it as the most dangerous road of the world. The danger of the road, ironically, though, has made it a popular tourist destination starting in the 1990s. Mountain biker enthusiasts in particular have made it a favorite destination for exhilarating downhill biking. The star says that an average of 2 vehicles keep falling. Now, अब मैं अगर आपसे बोलूं कि जो हमारी VSS है वो आपको एक ऑल पेड ट्रिप पर लेके जा रही है. Now would you like, after the COVID thing is over, COVID-19 thing is over, would you like to go on this particular adventure, all paid trip? Most of you would agree क्योंकि क्या लिखा हुआ, extremely beautiful with gorgeous mountains, cliffs, greenery, so on and so forth. Now let me show you कि वो किस तरह से दिखता है. These are the following pictures जो उस place की actually हैं. This is the kind of roads it has. दो गाड़ियां आपस में जब क्रॉस होती हैं तो शायद इस तरह की कुछ सिचुएशन
होती हैं. Now I am kind of sure कि बहुत सारे लोग जो पहले एक all paid trip पे जाना चाह रहे थे, they might have thought otherwise. और जब ये pictures उन्होंने देखी, तब उनको लगा होगा कि ओ, वो जो 2 vehicles गिरते हैं, हम भी उन vehicle में से एक में हो सकते हैं. The point is concretize. हमारे दिमाग को कॉन्क्रीट फॉर्म में दिखाओ कि क्या हो सकता है, क्या नतीजे हो सकते हैं. Now, if I am not going to clear my chartered accountancy course, what can happen? What can happen? I might end up being a nobody. मैं आप लोगों को डरा नहीं रही हूँ, मैं आप लोगों को आगाह कर रही हूँ कि अगर हमने जिंदगी के 5 साल लगा दिए और उसके बाद भी सीए नहीं हुआ तो क्या होगा. हम शायद इस बारे में सोचते ही नहीं हैं. यू नीड टू गिव दैट पिक्चर टू योर माइंड. यू नीड टू कॉन्क्रेटाइज कि हाँ, आप अगर 5 साल लगाने के बाद भी हमने अपनी सीए की डिग्री नहीं हासिल करी तो हम कहाँ लैंड करेंगे. और जब आपने अपने दिमाग को वो पिक्चर दिखा दी, तब आपका दिमाग क्या करेगा. नाउ दैट मोमेंट आपको दिमाग को समझ आ जाएगा कि आई हैव टू स्टार्ट वर्किंग हार्ड इन ऑर्डर टू अचीव माई डिग्री, बिकॉज I am not here to waste my time. I cannot waste my time just like that. If I am investing the golden years of my life in this CA course, I need to achieve it. There's a book called The Secret. उसके बारे में फिर कभी फुर्सत में आपको बताऊंगी, बट जिन लोगों ने पढ़ी है, आई एम ग्लैड, नहीं पढ़ी तो डेफिनेटली उस बुक को पढ़िएगा. एंड दैट बुक ऑल्सो टेल्स यू टू कॉन्क्रेटाइज. सामने देखिए कि किस तरह से नजारा है एंड देन स्टार्ट वर्किंग इन दैट डायरेक्शन. सो कंडीशन योर माइंड फॉर कॉम्प्लेक्सिटी. एक बार में पहले धीरे 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 करके जब पढ़ाई शुरू हुई थी तो ABC से पढ़ाई शुरू करी गई थी, डायरेक्टली सेंटेंसेस या वर्ड्स पे हम नहीं आए थे. कंडीशन योर माइंड फॉर कॉम्प्लेक्सिटी. धीरे 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 करके कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स देते जाइए दिमाग को, एंड योर माइंड will work in that direction. So the 4 biases and their solutions of how to train your mind is self-serving bias. Have friends, have mentors, have elders in your life that can keep you grounded. Cognitive fluency, if it sounds good, question it. Sunk cost fallacy, focus on future cost and benefits and not past losses. And confirmation bias is search for the contradictory evidences and then take your decisions. So that was it from my side. Thank you so much, all of you, for being a lovely audience. And if you have any queries or any questions, you can contact me on my email ID or take my phone number from the VSSC team. Once again, a heartfelt gratitude for giving me the opportunity to the entire VSS team and the directors and co-directors. Thank you so much. Over to Harshit. Thank you so much, ma'am, for your edifying words. This session truly made an value addition to our knowledge and wisdom. Our brain is truly our greatest asset, wider than the sky. Now, I would like to put this session to end with a quote by Mahatma Gandhi. A man is but the product of his thought. What he thinks, he becomes. Now, it's time to commence with next session of the day. मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जीवों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाए, कुछ कर जाए. सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे. सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे. अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे. I, Vidula Sharda, take an umpteen pleasure and delight to introduce our next session of the day, titled Accounting, Kal, Aaj aur Kal. As you muddle through busy season, haphazard vouchers, disordered cash,
Do you have a sense of how exactly your firm is growing? That's where accounting comes to your rescue. It mobilizes your cluttered financials and help you prepare a concise statements. It is often said that accounting is possibly the most boring subject in the world. But if you want to be rich, sustain your opulence, it could be the most important subject. And with changing times, this profession of accountancy is witnessing the drastic change. Think about cloud-based accounting, mini bots, blockchain technology, and many more. Yes, they are becoming part of our accounting with a lightning speed. In accounting, it is said, surround yourself with assets, not liabilities. So, I would like to call one of our such prized assets, Edupreneur, CA, Pawan Bhatia sir, for special address of the day. He is a trainer, counselor, and a recruitment strategist from Jaipur. He has a professional experience of working with Bharat Infratel Limited and ENY in his initial phase of career. Over to you, sir. Thank you. Thank you. A very warm good evening to all our esteemed uh, guest speakers, respected patrons of Vitta Salakar Samiti, and all my dearly curious students. It gives me immense pleasure to welcome you all to this extravagant day 5 of our widely appreciated webinar, Karlo Dunia Mutti Mein. If you all can analyze and if you all can notice, our theme, Karlo Dunia Mutti Mein, signifies or reminds me of the jingle or the logo, or not the logo, the jingle used by Reliance Telecommunication when it came up with its telecom services in India. They also used to call it Karlo Dunia Mutti Mein. That was one disruption that time. Today, we are again standing at another such crossroads of time when we need disruption. Disruption in the way we teach, disruption in the way we learn, disruption in the way we live, and disruption in the way we work. If I gather my experience from last 4 days, whatever the trainers and whatever the speakers have taught us, because I have been a continuous part of this webinar throughout all the 4 days and today itself in the first half, I can gather three important learnings, which I also align with my life. I have an experience of 7 years while working with Bharti Infratel Limited and Ernst & Young, and now as a recruitment consultant. I can tell you there are three important virtues or three important habits that I personally inculcate, and all those habits have already been spoken and told by our esteemed guest. The three values, those are, the first value that I learned was the power of experimental learning. Now, what do you mean by experimental learning? By experimental learning, I mean to fail, to rise up, to be wounded, to find your own fit. I cannot fit in my father's clothes, neither my father can fit in mine. So it is up to the student how he looks up to the things around him. Many faculties, many mentors, many seniors might tell you, go for both the groups. But it is you, only you, who can answer this question, whether are you ready for both the groups or not. And in case if you are not, do not fall for the folly of getting the extra marks because of the set-off. Probably next time you perform that well, that you do not even require the set-off, right? If I share my experience, like when I was pursuing chartered accountancy back in 2011-12, I won CA final in the year 2012. Till that time, I used to study in morning. So morning time used to suit me. But, I took one, I cleared in 2 attempts. So I failed in 1 attempt. And when I introspected, when I analyzed my results, I came up with one observation. And that one observation was, because since I study in the morning time, I waste a lot of time, even if I wake up at 7. So I used to wake up at 7, sip coffee or tea, used to watch news channel because I am a sports enthusiast. So at 8:30, there always used to be a sports news. I used to read newspaper, walk around, and used to start studying at 10. Then what's the point of waking up at 7 if you're studying at 10? I completely changed my strategy. I completely experimented with things that I have been doing since school. I used to study in the morning since school time, and I could even clear my PCC.
using the same strategy. But actually, I took that risk and changed it in final. I started studying at night. Nights are the best time to study. It's not always great to be an early bird. You can be a night owl. Nights have this beauty of silence. You can concentrate. There are no deviations. There are no distractions. You do not have mobile phones. You do not have televisions around you. And at least I can say that it is completely up to you how you look up to the situation. These are two examples, and there are many examples. I can also remind you one example from, since I am a cricket enthusiast. If you remember World Cup 2007, T20 World Cup 2007, which happened in South Africa, Dhoni had two choices. One was Harbhajan Singh, the other one was Joginder Sharma. If he would have been a regular captain, he would have probably gone for Harbhajan Singh, and we would have probably lost the match. I don't know. I'm not an astrologer, so cannot do a scenario analysis. But he went with Joginder Sharma, who was confident at that time that he can do it for India. And if you recall, he was hit for a big six by Misbah-ul-Haq. Still, with able leadership and his self-belief, he could crack it for India, and we won the World Cup. So experimental learning is one learning or one virtue that I always preach my students and also follow in my life. The second virtue that I want to quickly speak on is self-belief. I am pretty sure that you might have heard the news today or might have read the news today that Elon Musk, SpaceX, actually launched 2 rockets. And if you go by Elon Musk or SpaceX history, the company was not even existent in last 7 years. It only, not 7 years, probably 3-4 years. It was just created 3-4 years back. And if you look today, they are sending rockets. See, if he also experimented a lot. He sent a car, in space. I don't know what's the use of that car. However, his rocket experiment worked. When he started his journey with SpaceX, he was unable to gather rockets. He went to Russia. He did not get any rockets. He said, okay, I have a self-belief. I have this attitude of experimenting. I will learn it myself and develop rockets. And today is the day, merely probably 4 or 3 years down the line, he's able to launch a rocket with 2 astronauts in it. So that's the power of self-learning. That's the power of self-belief. The third virtue that I want to speak on, the last virtue that I want to speak on, is consistency. I'm pretty sure you all might have gone to Pizza Hut or maybe McDonald's, and you might have noticed the burger, the pizza, or whatever you order, whatever eatery you order, that particular item is delivered in the same way, it is presented the same way, it tastes the same. Why so? It is because of the concept of consistency. If you persistently pursue a goal, if you persistently and consistently do something, it will definitely work for you. I would like to end my speech by 2 inspiring lines for all the chartered accountants, qualified, and all FCAs, that means future chartered accountants, that is our beloved students, to inspire them and to actually bring in forth their condition. मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है, मैं पत्थर पर लिखी इबादत हूं, मैं पत्थर पर लिखी इबादत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम कब तक मुझको रोकोगे, तुम कब तक मुझको रोकोगे. With these inspiring lines, I request the MOC to take over the session forward, and thank you all for your patient listening. Over to MOC. Thank you so much, sir, for your scintillating words. Your 3 virtues will always be remembered by us. Now, I would like to call our another prized asset, CA Hemant Kaushik sir, who will introduce us to our today's versatile and savvy speaker, CA Paresh Gupta sir. Hemant Kaushik sir is currently the General Secretary of the Youth Wing of RTCA. He is a dynamic personality with vast experience in the field of auditing, internal control, and financial reporting. Over to you, sir. Hemant Kaushik, sir. Thank you, Vidula.
Good evening to all. Post this session, we would be concluding this 5-day webinar series, which we have named Kar Lo Duniya Mutti Mein. I think this was a difficult time, COVID era, in which our respected directors of this program, CA Rohit Ruwatia ji and Gautam Sharma ji, have taken a great initiative to launch this webinar series for the benefit of all the CA students. Apart from that, they have already concluded a webinar series for chartered accountants as well. I'm thankful to both the program directors, program coordinators, and other conveyors for giving me this opportunity to be part of this dynamic team and work as program coordinator. I must congratulate entire VSS team and students who have made this program huge success. In last 5 days, all the students have been immensely benefited by the knowledge and inspiration and their actual experience shared by the great leaders of our fraternity. So, friends, during these days, we have discussed multiple times that we need to focus on technology and we should be adaptable to the technology. So my question is, are we really adaptable to the change and we are adaptable to the technology? So the answer is yes, because when we are not able to conduct seminars, we are conducting webinars. But I here have a question to everyone, that we are in a very competitive world today. And I think the most important thing is the proactiveness which can bring the change in our lives. So instead of waiting for this COVID era, we should have already moved to this webinar because it is very cost effective, reach is very wide, so benefits are immense. We just need to realize, and instead of waiting for opportunity, we have to be proactive in our thought process and actions. So today's topic is about accounting aaj, kal, aaj or kal. So accounting has already seen a evaluation. It started with manual book reading, and now we have moved to computerized accounting, and now we are talking about automation of accounting, and it is already happening. And there are processes which have organizations which have already developed robotic automation of the accounting processes. So today we have Paresh Gupta sir, who is with us for who will talk about this subject, accounting kal, aaj or kal. So CA Paresh Gupta is my good friend and mentor to thousands of CA and CA students. Lot of people must be knowing him. For those who don't know or new to Paresh, his prof introduction is here. CA Paresh is 6 times TEDx speaker, founder and CEO Global Center for Entrepreneurship and Commerce, brand ambassador Rajasthan Government Youth and Sports Activities, and brand ambassador Rajasthan Tax Practitioners Association Youth Wing. Mentor to some of the world's best startup winners, mentor to Startup Co Singapore, Viridian, Spark Singapore, MNIT Incubation Center, advisory board member at Head Start Network, startup mentor and advisor at CVS, NIM, SMS, INAC, KMC, and many other institutions. Paresh is alumni of Sri Ram College of Commerce and a first attempt chartered accountant, and a MBA from London School of Business and Finance. He is a trained financial modeler from Opres, UK, rated amongst the top 20 credit research analyst team in Europe. Over 13 years of corporate experience across Asia, Middle East, Europe, and USA, with some of the most reputed names like PricewaterhouseCoopers, HSBC, Advanity Global Service, and Keypoint Consulting, Bahrain. He returned back to India in 2011 to start entrepreneur journey
and founded a 3 times national award-winning company, Sharp Edge Learning, co-founder and investor in Neos Angels, a startup consulting company, PLEA, focused on saving the earth, 2 trees, focused on greener planet, ACCA master classes, online ACCA classes, Map Your Skill, and My Career Architect, focused on skill building and many other activities. He also runs a real estate and agriculture business and provides strategic advisory to various young startups. So we can briefly say he is a serial entrepreneur. So over to Paresh sir for today's topic. Oh my God. Okay, so I mean, super thrilled, super amazed, and super thank you for inviting me here as a speaker today. So a lot of thanks. I wish Vittaya Salakar Samiti to do amazing. So आप लोग जो कर रहे हो बहुत amazing कर रहे हो. I am so proud of each one of you, and the kind of effort it goes to organize something like this is huge. So हर एक जना जो इस चीज के ऊपर काम कर रहा है, effort डाल रहा है, I think a big round of applause for every single person, right from a volunteer to the president. Everybody here deserves one, and all the speakers, I think everybody has spoken so well. और मैं अब थोड़ा tension में आ गया हूँ कि what I'm gonna so जो मैं बोलने वाला हूँ वो थोड़ा सा अलग होने वाला है. So everybody has been talking more about motivation and shlok and quotations दे रहे हैं. मैं ऐसे talks काफी सारे देता हूँ, but today's talk is not like that. Today's talk is more technical, and I want to share more things which are futuristic. So I want to talk about what is going to be the future of accounting. बहुत कुछ बदलने की कगार पे खड़ा हुआ है. I think we need to actually start thinking about looking at. So once again, I just need to share my screen. So can somebody enable this, please? So yeah, one of the moderators, can you please help me out with this? So I want to share my screen. So what we're going to talk about today is artificial intelligence, blockchain, future of accounting, और क्या बदल रहा है, and जो कुछ हम अभी पढ़ रहे हैं एक्चुअली. सो मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल से शुरुआत करता हूँ कि जब मैं आई थिंक स्कूल में पढ़ता था और जब मैं मतलब अराउंड 8th 9th 10th क्लास में था, तो मेरे पापा मुझे बोलते थे बेटा शॉर्ट हैंड सीख लो, एंड शॉर्ट हैंड की बहुत डिमांड होने वाली है. और पता नहीं कहीं पे ऐसा लगता था नहीं यार ये शॉर्ट हैंड ऐसे रहेगा नहीं, कंप्यूटर्स हैव ऑलरेडी कम इन एंड थिंग्स विल चेंज. And today nobody even knows what is shorthand. तो वो shorthand गायब हो गया है because of computer, because of voice recognition, because of so many other technologies coming in. Everybody, आज की डेट में हम सेक्रेटरीज रखते ही नहीं है. हम आज की डेट में वो डिक्टेशन चीज जैसे नहीं देते हैं, खुद टाइप करते हैं, अपने लेटर भेजते हैं, मेल लिख देते हैं, काम खत्म हो जाता है. So what is important is for us to see कि आज से 5 साल बाद क्या होगा. और अगर हमें अपने करियर को, लाइफ को, बिजनेस को आगे बढ़ाना है, प्रैक्टिस को आगे बढ़ाना है, जॉब को आगे बढ़ाना है, स्टडीज के लिए बेस्ट काम करना है, तो वी हैव टू स्टार्ट थिंकिंग कि आज नहीं, आज से 5 साल बाद क्या होगा, आज से 10 साल बाद सिनेरियो क्या होगा, और क्या हम उसके लिए अर्ली रनर्स हैं, क्या हम उसके लिए अर्ली प्रिपेयर्ड लोग हैं. एंड आई थिंक इफ वी आर नॉट डूइंग दैट, देयर इज अ सीरियस प्रॉब्लम. सो आई थिंक दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट कि फ्यूचर कैसा दिखता है हमारा. Can I request the moderators to help me share my screen, please? Can somebody help me, please? Hemant or anyone who can help me out? Vidula, can somebody help me with my screen sharing, please? I am trying to, but it says host is disabled attendee screen sharing. So just a second, sir. Okay, it will be done in a couple of minutes. Okay. So just a second. I'm just giving. Oh, sure. So anyway, so you can now share your screen. Wonderful. So let me get back on this one. And where are we? Let me share my screen. Yep. Here we are, and this is exactly what I want to talk about. And I want you guys to identify this one. So यहाँ से शुरुआत करते हैं. I don't know, काफी सारे लोग इसको जानते होंगे, नहीं जानते होंगे. She looks like a pretty female, but her name is Sophia, and she is the first humanoid
और फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमनॉइड है और बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशंस है. शी केम टू IIT दिल्ली एंड शी विजिटेड IIT दिल्ली. वहां पर कॉन्वर्सेशंस हो रहे थे एंड you know, you'll be surprised, but she could actually answer questions with her own knowledge. In fact, एक बहुत amazing debate हुई और उस debate के अंदर you know, इससे सोफिया से पूछा गया कि future क्या होगा. तो she said कि all humanoids will take over the mankind and human beings will stop existing and only humanoids will exist. And you know, everybody got so scared कि बाप रे ये हो सकता है क्या, you know. So that is the level of technology that we are expecting today. You know, आज की डेट में हम ये देख रहे हैं कि computers are able to do and technology is able to emulate human beings. वो human beings की तरह react कर पाते हैं, human beings की तरह act कर पाते हैं, and that is exactly what is the future. So सबसे मजेदार चीज ये होने वाली है कि you know, technology will become parallel. अभी तक टेक्नोलॉजी के हम बॉस थे, अब टेक्नोलॉजी हमारे साथ में खड़ी होगी. और यू नो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो डायमेंशन या जो कैरेक्टर है, जो डेफिनेशन है, बाय डेफिनेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते ही उस चीज को है जब कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी हमको बेवकूफ बना सके कि देयर इज अ ह्यूमन बीइंग बिहाइंड इट. You know, that is called artificial intelligence. So the primary definition of artificial intelligence is कि हमें बेवकूफ बनना है as human beings, कि हमें लगना चाहिए सामने पीछे की तरफ कोई human being है. अगर वो चीज कोई कर पा रहा है, then that is typically called artificial intelligence. And it is not a new word. So ironically, everybody will be surprised to know, but this kind of technology is from 1950s. So artificial intelligence started coming in 1950s and Turing test बोला गया उसको, जहां पर you know, there was a term coined कि अगर कोई इंसान किसी तरह से, मतलब कोई भी मशीन अगर आपको कोई भी थोड़ा सा महसूस करा सके कि there is a technology, there is a human being behind this, then that is called artificial intelligence. And it has evolved over a period. I don't want to spend a lot of time, but Deep Blue in 1997 could actually beat Gary Kasparov in a chess game. So computer, कभी लोगों ने सोचा नहीं था कि कंप्यूटर एक चेस गेम में ह्यूमन बींग्स को हरा देगा. आज की डेट में बहुत सिंपल है. इनफैक्ट आई थिंक आई वाज, यू नो, लॉकडाउन के पीरियड में आई वाज, यू नो, प्लेइंग अ लॉट ऑफ गेम्स ऑनलाइन ऑन फोन्स. आई वाज चेकिंग, तो आप कोई भी ऑनलाइन गेम उठाएंगे ना, वहां पर वो आपको को प्लेयर्स देते हैं, और वो को प्लेयर्स कंप्यूटर बेस्ड इनेबल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्लेयर्स हैं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते. So I downloaded Uno, you know, and typical Uno game on your phones, and it will give you automatically 2 players who will play with you, and they are not actual players, they are humanoids, they are artificially intelligent machinery products. And there have been now, you know, dogs. So आपके घर का काम करने के लिए, आपके लिए, you know, there are dogs now created, there are vacuum cleaners created, and most critical is everybody knows Alexa. I think so. Classic example of technology is Alexa today, जहां पर हम लोग देख रहे हैं भाई Alexa ये कर दो, Siri, you know, I mean, so Siri and Alexa are, you know, and this is also not new, believe me, this is 2014. So Alexa is not 2019. ये आज हमारे घरों में आई है. So India में आज हम Alexa, you know, and Google Help and, you know, Siri आज हम अपने घरों में देख रहे हैं, but this is what was already done in 2015. So imagine कि काश आपको 2014 के अंदर ये पता होता कि Alexa हमारे घर में आने वाली है, तो हम एक्चुअली उसके हिसाब से प्लान कर सकते थे. एंड हमारा करियर या हमारी लाइफस्टाइल या हमारा थॉट प्रोसेस, या हम घर बनवा रहे होते तो हम सोचते कि यार टेक्नोलॉजी इनेबल्ड घर बनवा लेते हैं, क्योंकि दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द फ्यूचर इज गोना लुक लाइक. नाउ द रीजन आई एम बिल्डिंग दिस बैकग्राउंड इज कि आप जब भी अपने जिंदगी का, करियर का, बिजनेस का कोई भी डिसीजन लें, प्लीज डू नॉट टेक अ डिसीजन जस्ट बेस्ड ऑन टुडे. आज डिमांड में है, आज ऐसा है, बस शॉर्ट टर्म नहीं सोचना है, हमको थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचना है. हमको सोचना है कि क्या ये 5 साल बाद भी रहेगा? What is the future 5 years from today? And let's try to think of as accountants कि accounting career का future क्या होने वाला है? What is the future looking like? And I want to, you know, probably you know, just do a quick game. In fact, if you guys want to, you know, and आप लोग सब online हो, you guys can go to this site called Quick Draw. You know, so अगर आप जैसे Quick Draw खोलते हो, and you can, you know, see this site. And it's very interesting because जैसे ही आप Quick Draw पे जाते हो, one second, so I have missed this one. Yes, Quick Draw, and वो आपको बोलेगा let's draw, और आपको बोलेगा कि draw something, draw scissors, and you have 20 seconds, and you'll be surprised, but the computer will be able. I see finger.
Or cactus. Oh, I know. It's scissors. See, it has done it. So computer today, artificial, and you can keep on playing. This is a very addictive game. I love this, game which keeps on going. कि आज की डेट में हमको कुछ नहीं करना है. Computer is actually, technology is able to tell us what's going to happen. And if that is the scenario, we have to be ready कि as accountants, आज जो हम काम कर रहे हैं, क्या वो future में रहने वाला है, right? And क्या वही चीजें हमें देखने को मिलेंगी या फिर कुछ और होने वाला है. So things are going to be very different. And let's not only worry about artificial intelligence. So I want to tell you the background behind this whole reason कि कहाँ से चीजें शुरू होती हैं. सबसे important चीज है, कोई भी चीज automate होती है तो उसमें होता है information. Now, what is the difference? मैं अपने time से versus आज के time पे, and I became a chartered accountant like in 2002. So it's been more than 18 years for me since I became a chartered accountant. आज 18 साल में I can tell you something very, very, very starkly different. सबसे बड़ा difference है information. कि हमारे time पे हम लोग ना एक library में book लेने के लिए भी ना मरते थे. We had to struggle to get a book. We were struggling to get that information. I belong to that generation. I sound very old right now by saying this, but I belong to that generation जहाँ पर हम लोग को cyber cafe में जाकर के email account possess करना was a very big thing. मतलब अगर आपके पास, and I used to have this email account called paresh@gmail.com, and I did not care about it, so it was lost. But in 2000-2001, I used to have a Gmail account with my personal first name, paresh@gmail.com. And हम उस era के लोग हैं. उस टाइम पे हम इंफॉर्मेशन के लिए मरते थे. आज की डेट में the only difference which has happened is information overload. So because of this information overload, things are very different. पहले के टाइम पे हमें चाहिए था और दो, information दो. आज के टाइम पे हमें चाहिए filters. And we are looking for filters today. We are looking for, अरे कोई उसको filter कर दे, कोई उसको better analyze कर दे. Let's look at COVID scenario. I mean, very, very simple example of this, that if COVID would have happened in, let's say 1990, right? 1990 to 2020, it's 30 years. 30 years पहले हम वो कर्व बना ही नहीं पाते. तो आज हम लॉकडाउन का डिसीजन लें या नहीं लें. US could predict 1 lakh deaths by June way in advance. अप्रैल में उन्होंने डिसाइड करके बता दिया कि 1 lakh death expected है हमारी कंट्री के अंदर. और वही नंबर है. मतलब if you look at the real numbers today, it's almost similar. So they are able to predict this through technology. They are able to predict this through this information. So हम वो curve बना पाए because of this information. Which means what? Which means कि अगर आपको अब इस point पे career में successful होना है, accounting field में जाना है, पहले अकाउंटेंट में ना हम जाकर के किसी को आता है बहुत बड़ी बात है. आज डेट में सबको आता है. आप गूगल पे जाइए, सारे लॉज हैं, सारे रेगुलेशंस हैं, रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं, IFRS पढ़े हुए हैं, लॉ पढ़ा हुआ है, एवरीथिंग इज ऑन योर डेस्कटॉप. बट व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस इज योर एबिलिटी टू प्रोसेस इट बेटर. एंड कैन यू प्रोसेस इट बेटर? कैन यू डू but more intelligent jobs out of the information available to you? And that is exactly what is going to change in the future. So हम सबको ये सोचना पड़ेगा कि क्या हम इस information को बहुत smartly access कर सकते हैं. I'm just, so there are some of these amazing games, if you guys want to get some, quick draw, Simantris, Avatars, Akinators, I know. मैं तो काफी ये सब use करते रहता हूँ because my job is to look at technology all the time. But try it out, So biggest problem, and in fact मैं बहुत सारे CA के सेशंस लेता हूँ, मैं बहुत सारी चीजें CAs के साथ डिस्कस करता हूँ, and I feel that CAs are the most intelligent, most hardworking set of people, okay? But the only thing which most of the CAs lack is adaptation to technology. हम टेक्नोलॉजी में बाकियों से काफी पीछे हैं, and in fact that is something which we have to start catching up with. Because अगर हम वो कैच अप नहीं करेंगे, मतलब मैं आज तक देखता हूँ कितनी सारी organizations are using primitive accounting tools. They are not using the latest technologies. अभी तक, and मैं आपको एक statistics दिखाऊंगा. In fact, so you'll be surprised to see कि हम लोग सारे लोग बोलते हैं Excel आना चाहिए. मतलब मैं आज तक CA students को ये देखता हूँ कि Excel पे काम नहीं करते और उनको Excel sheets नहीं आती हैं. And this is a survey done, what you see on the screen is a survey which has been done in international CFOs, जहाँ पे वो बोलते हैं Excel skills are now 7%. There is way more important skills required. So adaptation to new technologies is taken over the Excel skill requirement, and which has become way more important. Imagine, हम Excel से struggle मार रहे हैं आज तक.
So मतलब मैं आज जब young chartered accountants, budding chartered accountants, senior chartered accountants, मैं जिसको भी देखता हूँ, हम लोग बोलते हैं oh Excel skill बहुत बच्चे हैं, financial modeling, see look at the lower two, Excel skills and competence in modeling. फाइनेंशियल मॉडलिंग का कोर्स करते हैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लगता है अरे बहुत अमेजिंग हमने टेक्नोलॉजी सीख ली. Believe me that this is just the bare bottom. What is important is furthermore. So communication skills are very very important. Competence and KPIs is key performance indicators कि क्या आप अपना job role profile समझ रहे हो, and adaptable to new technologies. Most important factor कि क्या आप नई टेक्नोलॉजी सीख रहे हो, क्या आपको पता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, क्या आपको 5 कोडिंग लैंग्वेजेस आती हैं, क्या आप रोज and it's not about Instagram, Facebook, and it's not about using basic technologies. So it's about creating more technologies every day. Are you able to actually use artificial intelligence for, let's say, your daily accounting? Do you understand blockchain? Because blockchain, for example, is going to be the game changer. Agar aap blockchain, bitcoins, surprisingly, and I don't know how many of you read this news or not, ये कोविड के बीच में न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल गई सबके दिमाग से, एंड बहुत आयरॉनिकल सिचुएशन है कि मार्च के अंदर there is a court judgment which has come and which has allowed, which has said that it is no longer illegal to deal in cryptocurrencies, bitcoins and others. And which means what? Bitcoins आने वाले हैं हमारे पास क्रिप्टो करेंसी आएगी, हमारे पास बहुत सारे ये सारे टेक्नोलॉजी इनेबल्ड करेंसी आ जाएगी. लक्ष्मी which is the Indian counterpart of Bitcoin, it is being launched. And are you ready to handle this? My question to everybody listening to this webinar is, are you ready कि अगर इंडिया का एक बिटकॉइन लॉन्च होता है, आप में से कितने लोग उसको हैंडल कर पाएंगे? आप उसकी अकाउंटिंग भी कर पाओगे? क्या आप उसको हैंडल करके अपने क्लाइंट्स को समझा सकते हो कि दिस इज द वे वी वांट टू हैंडल दिस फॉर यू? बिकॉज अगर आप फ्रंट रनर हुए तो आप विनर होगे. So that is what is going to make you a winner, because that is where the future lies. So start reading about this, start reading about the latest technologies coming up in the market. Because I'll give you one more ironical fact. अगर आप गूगल पे जाके केवल सिंपल गूगलिंग करिए और वहां पे आप टाइप करिए मैक्सिमम जॉब लॉस इन द फ्यूचर, एंड आपको ये आंसर मिलेगा. The computers are coming, and these two, telemarketers, accountants and auditors, are going to face the maximum challenge because of computerization. So typical accounting and audit role is expected to decline, and it's expected to decline by 94%. So आज से 5 साल बाद हम बहुत कुछ बदलता हुआ देखने वाले हैं, and that is going to be very very difficult, because अगर हम उससे shape up नहीं कर रहे हैं तो accounting and audit in its current format will not happen, and we have to start becoming ready. I'll give you more facts on this one. So if you look at China, so I want to share this. Yes. So China has actually surpassed cash payments, and China has completely done away with cash payments to wallet payments and e-payments. So वहां पर सारे mobile payments हो रहे हैं. If you look at this green bar, that is about 75% payments in China today are technology enabled payments. Cash and credit cards are not happening, which means technology enabled accounting. Everybody is going on mobile apps. Everybody is accounting through technology. Now, if you are accounting through technology, if you're working on your mobile phones, if you're paying through your mobile phones, so how do you expect accountants should be working? Let's try to come back, and I don't know, am I going too fast? I'm not sure, but let's try to think about कि typical accounting process क्या है. अगर मैं this is my understanding of my CA days, and that's exactly how we used to do this. एक typical accounting जिस तरह से हमारे को books में पढ़ाते हैं कि भैया identifying of business transactions होगा, फिर voucher बनेगा, फिर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन डे बुक होगा, फिर लेजर में पोस्ट होगा, फिर ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा. थोड़ा सा इंप्रोवाइजेशन हो चुका है. लेट्स से फॉर एग्जांपल अ टैली और अ क्विक बुक्स, आप उसके अंदर एक बार जर्नल एंट्री डालेंगे, बट वो जर्नल एंट्री डालने से पहले देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ प्रोसेस बिहाइंड इट. सो इफ आई लुक एट and I can see
couple of people there. So if anybody wants to run me through a typical accounting and accounting entry process, so whoever is online, anybody wants to make a quote or a statement about, how do you really typically go about doing it? So Pawan, I think you're there, right? Would you want to speak up something on this one? What's a typical accounting? And you have to unmute yourself. So just shoot out. How do you typically do the accounting, and how much time? Yeah, the process is more or less similar now with SAP and Oracle coming in picture. Probably these day books have been removed, and now we have general ledger, and through which we can post the entries. Correct, but more or less the process is same, and it is very primitive, as you said. और मुझे ये बताओ कि मतलब अगर मुझे फॉर एग्जांपल कोई एक वाउचर, भाई मैंने एक परचेज करी ऑफिस के लिए, मैंने एक कंप्यूटर खरीदा, तो आप मुझे बताओ कि एक टिपिकल अकाउंटेंट कितना टाइम लगा करके वो एंट्री पास करके अपने मालिक को बोलेगा सर डन. ये टेल मी द प्रोसेस टाइम टेकन राइट फ्रॉम द परचेज पॉइंट टू द इनवॉइस क्रिएशन टू दिस. हाउ मच टाइम डू यू थिंक इट टेक्स? क्या होगा? It for one purchase or one voucher, he might take 5 to 7 minutes or 10 minutes at least for one transaction. और वो नहीं, बट उसके पहले अच्छा ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने में दिस इज लाइक वन रिकॉर्डिंग, बट उससे पहले बोलेगा मुझे फिजिकल कॉपी चाहिए. मैं आज तक अपने के अकाउंटेंट को समझा के थक जाता हूँ. वो बोलता है मुझे प्रिंटेड कॉपी लाके दीजिए, मुझे साइन चाहिए आपका फिजिकल, और उसके बाद आपका वेरिफिकेशन होगा आपने परचेज रिक्विजिशन दिया था कि नहीं दिया था. तो इट इज नॉट दैट यू मेड अ परचेज, आपका रिक्विजिशन दिखाइए, फिर मैं उसके थ्रू उसको वेरीफाई करूंगा, फिर आपका पेमेंट मैच करूंगा, और उसके बाद जाकर के वो एंट्री रिकॉर्ड करूंगा. तो मतलब रिकॉर्डिंग टाइम probably is 5 to 7 minutes, but the whole process at least takes 2 to 3 days, and I see this every day in my life and my daily business also when I'm struggling with the process now. Absolutely. So this is exactly where we are today. But what I want to bring to everybody's knowledge is, let's try to see what is happening now, and let's see the future. And I'm just going to introduce and there is just one 2 or 3 videos and the softwares I searched on Google. So there is a software called BotKeeper, and if you see BotKeeper, it actually instantly tries to capture the entire transaction. It says better than humans, better than machines, automatic bookkeeping with a human touch. And I would say anybody listening to this to this webinar should just go and search it out. आप देखो कि BotKeeper क्या कर रहा है, तो वो आपका पूरा bookkeeping process हटा देगा. In fact, मैं जब देखता हूँ, I go to so many MSMEs in and around the city in Jaipur. I still see people using Tally. Now, Tally का एक बहुत बड़ा complication है कि Tally is typically used only on desktops. It's a desktop application. It is not a mobile application. Now, I am mentoring, and personally, I was consulting a startup which was actually converting Tally into a mobile-based application. So now there are multiple apps which have come which actually build the whole thing on Tally. So Tally का base लिया, और उसके ऊपर they have started putting artificial intelligence. So that is the future. कि अब future में खाली Tally नहीं होगा, Tally के ऊपर MIS होगा, Tally के ऊपर data analytics होगा, और that is what chartered accountant should be doing. The future of chartered accountancy is not to tell the Tally operator कि बेटा ऐसे entry मारो, वो अपने आप हो जाएगा. उसके अंदर law feed in करो, regulation डालो, काम done. CA should now start looking at analysis of this. I'll give you another example. There's a India-based product, and this is called 4Receipt. Now, I think this is not a India-based product, but there's a video. I'm just going to run this video very quickly and see how this functions. And it's a very interesting video for everybody to just take a look. So guess what? The only thing which was done in this case was a scan of a receipt. So there was a Walmart का receipt. अगर आप इस पूरे process को देखेंगे, so there was only a Walmart का एक receipt आया, मतलब एक voucher था, उसको एक scanner से scan किया गया, और जैसे ही उसको scan किया गया, the entire process happened.
So nothing was to be done otherwise, you know. And वो जो receipt है, अगर वो physical है तब ये इस case में काम हो रहा है, और अगर आपका you know technology enabled है और आपने integrate करा हुआ है, तो जैसे ही उसने you know say for example you are an e-commerce company जिसका integration Flipkart के साथ या Amazon के साथ हो रखा है, so imagine the moment Amazon creates this voucher, it is done, it goes into all the accounting systems. And imagine that you are ready with your MIS and your verification. So इस पूरे 30 seconds के अंदर, so this was only a 30-second video. उस 30 सेकंड के अंदर वो वाउचर भी आइडेंटिफाई हो गया, पार्टी का आइडेंटिफिकेशन हो गया, रिसीट है, इनकम है, एक्सपेंडिचर है, एसेट है, लायबिलिटी है, वो आइडेंटिफाई हो गया, कितना अमाउंट है, कितना लायबिलिटी है, किसने वेरीफाई किया था, किसने ऑथराइज किया था, कहाँ जाना है, कौन कौन से एरियाज में जाएगा, कौन से वाउचर कौन से लेजर में जाएगा, कैसे ट्रायल बैलेंस बनेगा, कैसे इंपैक्ट होगा, उसका पूरा एनालिसिस एंड उसका MIS बन गया. और आयरॉनिकली उसके ऊपर उसने मल्टीपल शेयर होल्डर्स एंड स्टेक होल्डर्स को वो इंफॉर्मेशन भी रिवील करती जो उनके काम की है. Imagine, and all of this happening in mere 30 seconds, and that is where technology is going to be. Are we doing this at this way in our current systems? Is not. This is the question to ask, you know. So ये आपके लिए glimpse है कि future ऐसा दिख रहा है, ये हो रहा है. और and I'm telling you that this is not something which I'm telling you कि ये हो नहीं रहा है. मतलब I am telling you somewhere it is happening. This is happening in some places. Are we ready to adopt this in 5 years from today, 2 years from today, 1 year from today? If we are not, let's be ready, because that is exactly where future looks like. You know, agar hame futuristic jana hai, this is where we need to be. And that's what I want to bring. Same thing, let's look at audit. Same story, you know, audit mein hum kya karte hain? Audit is a bigger problem. In fact, I still see, I can tell you, मतलब मेरा, at least मेरा personal experience ये है कि बहुत सारी firms को आज तक manual printout निकालते हुए देखता हूँ, फिर इतने बड़े files और पोते बनाता हूँ, फिर देखता हूँ वो हर एक चीज को number करते हैं pencil से, फिर then they kind of match it up and say, अच्छा match, sample, match. Some of them are technology enabled, जो SAP enabled बड़ी companies हैं, banking systems हैं, वहाँ पे things have improved and they are improving every day, but there is still a lot of ground to cover, because जो हम जहाँ से planning process शुरू करते हैं, in fact ironically, how many of you are using random function or random number generation function of, let's say, simple Excel sheet to just select a samples? Very simple thing. आप एक equals to R&D और दो inverted commas में आप वो bracket आप बंद करके डाल दीजिए और random number create कर देता है. So हम random numbers भी कैसे generate करते हैं? हमें अगर random sample pick करना है, we are not using technology for random selections. Intelligent selections also. So in fact, it takes a lot of time to differentiate between material and non-material information during audit process. Now, are we able to look at this, you know, critical information on this side? So are we actually, you know, selecting, are we selecting the team right? Are we doing the legal formalities? Legal search, amazing technology is possible. In fact, I don't know how many of us have started using the search and bookmark functions in all the legal documents. So legal documents, I can still see a lot of people using pen and paper or just a PDF document. But आप उसमें bookmark करो, आप उसके अंदर highlight करके रखो, keyword search करके रखो, amazing technology is happening. So आप legal transactions check कर सकते हो, regulatory issues को check कर सकते हो. All of this is not happening, and that is exactly where audit is going to look like. Audit आज की डेट में भी हम कम से कम भी महीना लगा देते हैं. मतलब अगर एक बड़ी ढंग की लिस्टेड कंपनी होगी तो हम मिनिमम 1 महीना 15 दिन से 1 महीना ढंग की ऑडिट करने में लगाते हैं. Why should we spend our time in doing this job when this can be done through artificial intelligence? और हमारा काम क्या होना चाहिए? As chartered accountants, as intelligent human beings, we should be able to say, oh, this is the next level of audit. So we will do intellectual audits. We will kind of do more advisory audits. We look at more, you know, regulatory implications of the things. We look at the futuristic implications of the financial numbers. हम तो अभी matching में time लगा देते हैं, sample collection में time लगा देते हैं. So वो sample की जगह क्या मैं उस कंपनी को रादर ये नहीं बोल सकता कि यार देखिए आप अभी करंटली ये प्रोसेस यूज करते हो, आप अभी एक IFRS ये वाला INDAS यूज करते हो, do this and this is how it's going to look like. This is the implication. This is the outcome of this. आपकी कंपनी की materiality ये है, आपके material issues ये हैं, आपके material factors ये हैं. We don't give those recommendations. In fact, auditor is supposed to become more advisor. So they have to get into more advisory roles, looking at the future of you know, audit. And I am going to
kind of, conclude this with a small video around, again, how the computing process looks like in the future and what is going to happen. Just take a look. It's a very small, about a minute, 2 minute video. Artificial intelligence, AI, is a rapidly evolving area of technology that promises to be a game changer for various industries and is already being applied in areas as varied as driverless cars, home energy systems, and investment portfolio management. Accounting and auditing will also be affected. AI enables the analysis of a full population of data and can identify outliers or exceptions. The term AI describes computing systems that exhibit some form of human intelligence. It covers a number of interlinked technologies, including data mining, machine learning, speech recognition, image recognition, and sentiment analysis. For instance, machine learning can be used to automatically code accounting entries. By creating sophisticated machine learning-based models, auditors can also improve fraud detection. The audit is said to be further transformed by deep learning, a form of AI that can analyze unstructured data such as emails, social media posts, and conference call audio files. An example of how AI can be applied to the audit is in contract review. Machine learning tools allow humans to analyze a larger number of contracts, such as leases, in a much shorter time frame than is possible with a traditional manual review. In a recent pilot, AI tools were able to accurately extract information from lease contracts using pre-selected criteria in the vast majority of cases, a higher level of precision than the average human reviewer is capable of. By making it possible for auditors to work better and smarter, AI will help them to optimize their time, enabling them to use their human judgment to analyze a broader and deeper set of data and documents. It also enables them to ask better questions and to interact more with CFOs, audit committees, and company boards, adding value to the audit process. In this way, AI could contribute to providing better quality audits and an exciting future for auditors. So, I mean, the basic idea behind, this whole thing was that there is a lot happening and we have to start getting ready. So, machine up, research karna shuru kariye. So, start looking at blockchain, start looking at machine learning, start looking at big data. आज की डेट में big fours में big data and data analytics के जितने job roles मुझे दिख रहे हैं ना, उतने मुझे auditors के नहीं दिख रहे. So I can see a lot of demand. Every recruiter coming back to me and saying, "Oh, do you have somebody who can, help me with data analytics? Somebody who knows coding and chartered accountancy." So it's not they're looking for pure data analytics. They're looking for somebody with a combination of skills and CAs with a data analytics knowledge. So आप ये add-on courses करिए. I think this is, and trust me, this lockdown period is the best time for anybody to do this. So my personal advice to anybody is, please use this time to learn technology. Please do some good, great Harvard courses, MOOCs हैं इतने सारे, edX पे, Coursera पे, amazing courses on these technologies. Just spend some time. I think छोटा सा, 10 घंटे का course भी करोगे, it will actually differentiate you, and you will be a rock star. So my take is, yes, please start looking at latest things, future technologies, and start planning your careers. And I mean, that's all that I can probably say. Anybody wanting to reach out to me, my email ID is there, or best option is to reach out to me on LinkedIn. So more than happy, and share talks, questions, blah, blah, blah. Let it come and I'll be happy to answer anytime. Thank you, and over to the moderation team. Thank you so much, sir, for sharing your pearls of knowledge. वो खुद ही तय करते हैं मंजिलें आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, रखते हैं जो हौसला आसमान छूने का, उनको नहीं परवाह गिरने की. इसी सोच के साथ आगे बढ़ते जाइए, न जाने आपको आपकी मंजिल मिल जाए. More than 1,500 students registered for this webinar, and this is a huge success in itself. I, on behalf of Vitt Salahkar Samiti, extend a very warm gesture to one and all present here. A big thank you to all speakers for sparing their valuable time to bless this occasion and enrich us. Next, I would like to convey deep regards and hearty thanks
two pillars of this program, our director Rohit Ruvatia sir and CA Gautam Sarma sir. Also, our co-director CA Rohit Maheshwari sir and CA Ankit Jain sir. We all have been fortunate to be assisted by our coordinators. You all have been a constant support and you have given us a lot of encouragement. I would like to take the opportunity to bid a hearty thanks to our coordinators. CA Piyush Jain sir, CA Kamal Jain sir, CA Hemant Kaushik sir, CA Pavan Bhatia sir, CA Ashish Sachdev sir, CA Shubham Agarwal sir. So thank you so much all of you. I must not forget to thank the student conveners from each of the committee we have: back office committee, souvenir committee, registration committee, social media committee, IT committee, and MOCs of all the session who contribute to organize this conference until the last day. Last but not the least, I thank all the future chartered accountants for showing their immense interest in this webinar and making it a huge success. Today, we all are on the last day of our cheerful and knowledgeable journey of our webinar series. And unfortunately, we have to say goodbye. But you know what? If you're brave enough to say goodbye, life will reward you with a new hello. So by this, I, Khushbu Jain, take your leave in a hope of a new hello. Over to you, Kamal sir. Thank you, Khushbu. And now we are signing off for this webinar series for today, and we'll resume with the next program. Yeah. Paresh bhai, there is a question on YouTube. What, according to you, are the applications other than Excel that a student pursuing CA should know? This is for CA student has asked a question. What, according to you, a CA student should work upon or should know other than the application related to Excel? Okay. I can share a couple of things and then others can also add up, because I would say, see, I would say big data and data analytics is what they should do for sure. Okay. So they should definitely look at some level of data analytics, because data analytics is going to be the biggest game changer. Second technology, which I think is blockchain, because blockchain is going to be the future of accounting. So remote accounting करने के लिए blockchain एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपको अलग अलग लोकेशन से और दूर जगह से बहुत ही सिक्योर्ड तरीके से, तो बेस्ट एनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, और क्रिप्टो करेंसी और कैशलेस ट्रांजैक्शंस आएंगे तो वो आने ही वाली है। अभी तक लीगैलिटी का इशू हो रहा था, जो गवर्नमेंट के अंदर काफी बड़ा बैटल चल रहा था, एंड देयर आर लॉट ऑफ स्टार्टअप्स व्हिच आर स्ट्रगलिंग विद दिस, व्हिच हैज बीन लिफ्टेड। सो कोविड के टाइम पे एक बहुत बड़ी न्यूज आई है, जबकि क्रिप्टो करेंसी इज नाउ ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग लीगलाइज्ड। So blockchain is something which people should definitely learn. I would say big data and data analytics is what people should definitely look at. They should try to do 1 or 2 coding languages if they can. और एक चौथी चीज मैं बोलूंगा, एक वेबसाइट बिल्डिंग, खुद का वेबसाइट, खुद का ऐप बिल्डिंग, ये एक बेसिक स्किल्स हैं जो कहीं ना कहीं काम आ ही जाएंगी, सो these are primary skills from my side. ये भी काफी अपने आप में बहुत डिटेल्ड है, तो मतलब ब्लॉकचेन अपने आप में एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, उसका आप एक इंट्रोडक्टरी कोर्स भी करते हो तो काफी फायदा देगा। सिमिलरली डेटा एनालिटिक्स का बेसिक इंट्रोडक्टरी कोर्स भी करते हो, 2 महीने 3 महीने का तो लग ही जाएगा इतना कोर्स करने में। इनफैक्ट इफ यू कैन डू 1 or 2 languages, and if you can do HTML5 or CSS or something, it will be an added bonus from my side. But yeah, थोड़ा ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा। I would say this much for a CA student is definitely going to be a game changer from my side. Thank you, Paresh sir. Sir, I just hand over to the Rohit sir for the conclusion of the meeting. Rohit sir, please. It was really an amazing session, 5 days of learning with all. जितना कहे उतना कम है, एंड थैंक यू परेश भाई, एंड थैंक यू ईच एंड एवरीवन, जिसका नाम ले उसका भी कम, जिसका ना ले उसका भी कम, एंड वी आर साइनिंग ऑफ राइट नाउ एंड विल surely connected to each and everyone, and we'll continuously doing our efforts for all the students, all the members, to the best possible we can. Thank you once again.
Bye. Bye. Thank you. We are signing off. Bye bye.